5, 4, 3, 2, 1, 0. Hi, I am Neha and you watching Play City, the Children's Scrappy News Season 2. In this season, we are going to play our way finding solution to the biggest problem, climate change. हम क्यों खेलते हैं? हम खेलते खेलते ही सब कुछ सीखते हैं और बड़े होके भी खेलते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हमारे अडल्ट्स अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम खेलते खेलते क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। So come on, are you ready to be scrappy? Welcome to Scrappy News. My name is Tanya. My name is Ritik. आज हम आर्ट डेको के बारे में बात करने वाले हैं। आर्ट डेको के बारे में आपको मालूम है? हाँ, थोड़ा थोड़ा मालूम है। बताओगे? आर्ट डेको मतलब पुरानी बिल्डिंग को डिजाइन रहना और उसमें एक स्टिक रहना, तो वो उसको आर्ट डेको कहते हैं। इसके आगे मुझे नहीं मालूम। तो मैं आज आपको पूरे अच्छे से बताता हूँ। मुंबई एक ऐसा दूसरी शहर है, यहाँ पे आर्ट डेको के कई सारे बिल्डिंग है, 200 से भी ज़्यादा उसके ढांचे हैं। मुंबई में आर्ट डेको के बिल्डिंग अच्छे दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। 90-10 से लेके 90-40 तक में आर्ट डेको के बिल्डिंग्स बने। चलो मिलते हैं रिपोर्टर से। मैं हूँ आपका दोस्त रुचा मोकल और मेरा नाम है माही लोंडे। तो आज हम जाने वाले मुंबई घूमने। फिर उधर हम लोग को नई नई इमारतें, बीचेस और क्या क्या मिलेगा रुचा? हमें नए नए रोड्स, नए नए ब्रिजेस, ये सब भी देखने मिलेंगे। ओह, तो चलो अंकल हम निकलते हैं। बाय। देखकर मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। जीप तो बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट की है। और ये देखो, इधर तो बहुत क्यूट सा फैन भी रखा है। इधर ये थाला रहता है ना, थाला, इससे ये बनाया है। और इधर तो न्यू बिल्डिंग्स भी है। और इधर तो बहुत सारे प्लांट्स है। और ये देखो अपना मनी प्लांट कैसा है। और ये सब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से बनाया है। हाँ, about art decor. You might be surprised to learn that Mumbai contains the world's second largest concentrations of art decor buildings after Miami with more than 200 such structures. Art Deco brought a refreshing breath of air for the creative field starting out around 1920s. In Paris, elements of Art Deco are symmetry, intricate line art, rectilinear geometry, aerodynamic curves, metallic color like gold and chrome. Okay friends, let's see some Art Deco buildings in Mumbai and learn about what the Art Deco is all about. So let's go. See how the sea is very beautiful. The sea is very blue.
मरीन ड्राइव पे आप गए हो कभी? हाँ गई हूँ। बताओगे जरा उसके बारे में? हाँ, मरीन ड्राइव पे चर्च पे गई थी, जहाँ पे अलग अलग डिजाइन के बिल्डिंग थे, जिसमें कौन सा ट्रायंगल शेप था, तो कौन सा डिजाइन अप डाउन सेट और कौन सा फोल्ड डिजाइन, वैसे डिजाइन। आपको वहाँ पे जाकर अच्छा लगा? बहुत मज़ा आया। Hi, I'm Kaivan Umriga and I represent Khaki Tours, and today I'm going to take you on a walk through my backyard, which is DPC or the Dadar Parsi Colony. The Dadar Parsi Colony is my home for the last 50 odd years. Let's start with the D for Dadar. So behind me is the statue of Mancheji Edalji Joshi, and if you read what's written underneath, it says he's the principal founder of the Dadar Parsi Colony. The colony also has a grandfather. And that's not a person, it's a disease. And just like you have COVID ravaging the city today, in the year 1896, the disease that ravaged the city was the plague. The city of Mumbai then was very different from the city we know it today. You had the fort, which was the nucleus of the city. Beyond it, you had the native town. So if you look at this picture, you see this triangular building here. This was the one that used to be here at this spot. And right at the center it had these lovely cute balconies. This building was in the Art Deco style, but unfortunately as the city redevelops, the building has disappeared. This new suburb was designed to be everything the inner city was not. So if you look behind me, if you see, the wall is only about half the height, whereas the top half has grills. The idea was that the breeze should flow into the ground floor. If you look at the height of the building, it's only 2 stories. And that was where the height was capped. The idea was that the height of the building should be proportionate to the width of the road, so that the sunlight could penetrate right down to the ground floor. So if you see, there are spaces and open spaces in front of the building as well, and at the sides. And again, this was mandated by law that this much open space had to be there, so that air and light could, reach all parts of the buildings. So the plague visited Mumbai in 1896. Today when you think of Dadar, you think of it as being at the center of the city. But that was not so about 100 years back. Not too many people wanted to shift to Dadar, and as a result, the British came up with a road called the Eastern Avenue, which is the road you see behind me. This road was 150 feet wide at a time when there was hardly any traffic in the city. And it still caters to the current traffic density in the city as well, without it being ever widened. When Mancheji Joshi came up with the idea of housing Parsis in this newly developed area of Dadar Matunga, a cooperative housing society was formed called the Parsi Central Association Cooperative Housing Society. He made sure the colony had a gymkhana, a library, a community hall, a school, a dispensary, and a place of worship. The actual area has about 20 odd parks and gardens. Unfortunately, what is happening now is the ground is getting concretized over. The space is now for cars instead of people. And with that, we are betting climate change because rainwater has nowhere to run off to. That's creating floods. Earlier, there used to be a balance between development and your environment. But slowly, environment has gone for a toss. It's all development. क्या बोलूं? तुझी झलक वेगली श्रीवल्ली अरे आज हम खेलने वाले हैं गेम। क्या बोलूं? तुझी झलक वेगली श्रीवल्ली अरे आज हम खेलने वाले हैं गेम।
आपको मालूम है तो पुराने ज़माने के बिल्डिंग नए ज़माने के बिल्डिंग से स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वो बहुत अच्छे दिखते हैं, उससे हम लोग को सीखने को मिलता है। हाँ, नए नए चीज़ सीखने मिलते हैं। क्यों पुराने ज़माने के बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है नए ज़माने के बिल्डिंग से? क्योंकि पुराने ज़माने में कुछ चीज़ें इस्तेमाल किया जाते थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते थे। अभी की चीज़ें में सीमेंट और ईंट इस्तेमाल किया जाता है। अभी के बिल्डिंग में भी यूज़ करते हैं सब पहले के बिल्डिंग में, मगर यहाँ पे पैसा ज़्यादा ले रहे, मगर अच्छे मटेरियल यूज़ नहीं करे, इसके वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं होते। चलो मिलते हैं रिपोर्टर से। हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं आर्ट डेकोर बिल्डिंग्स की तरफ। आप देख ही सकते हैं हमारे पीछे आर्ट डेकोर बिल्डिंग है। ये सामने से कर्व्ड है और आजू बाजू से स्ट्रेट है, बिल्कुल यू शेप की तरह। आपको नहीं लगता रुचान कि ये टाइटैनिक बोट के जैसा दिख रहा है? हाँ, ये तो मुझे सेम वैसे ही दिखता है। को ये बिल्डिंग का खासियत क्या अच्छा लगा? मुझे तो ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी है क्योंकि इसमें जो नई नई आर्ट की है ना उन लोग ने, उसके लिए। आपको कैसी लग रही है रुचान? मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जो इनकी गैलरीज बाहर है और जो येलो कलर है ना वो मेरा फेवरेट है और वो ये बिल्डिंग में बहुत सूट भी कर रहा है। तो चलो हम कुछ लोकल जन से पूछते हैं। आपको कैसे लग रहा है ये बिल्डिंग के बारे में? ये बिल्डिंग तो मैं काफ़ी टाइम से देखते आ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे आर्ट डेको बिल्डिंग्स है इस लेन में। तो संडे के टाइम जब भी मेरे को छुट्टी होती है तो मैं इस तरफ चले आता हूँ, इन बिल्डिंगों को देखता हूँ और कुछ अपने मतलब पुराने जो बिल्डिंग के आर्टिस्टिक शेप से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने काम में भी इन चीज़ों को लाया जाए। जैसे आप भी स्टूडेंट्स हो तो आपको भी इन चीज़ों से सीखना चाहिए। हाँ। देखा आपने जो लोगों का क्या कहना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बी स्क्रैपी। स्क्रैपी। Hi, my name is Kayomi Marisban, engineer. I'm a Zoroastrian Parsi resident of Mancherji, Edalji, Joshi, Parsi colony, Dadar. It is the largest enclave of Zoroastrian Parsis living anywhere in the world together in a community environment. Great architectural heritage. So, welcome to our home. This is where we live. The buildings have a certain distance apart from them. We have great ventilation. Architecturally, all the old buildings that we see, the art deco, the few art deco buildings that we spot in our locality. We are fortunate that some of the spaces that we live in Parsi colony are designed architecturally in a very well-planned manner. Not just from the outside, but the inside as well. Most homes in Parsi colony have designated living spaces. There is what you call a family room or a hall as it is known. There is a proper kitchen and dining area, your bedroom, your amenities, your washrooms, all of those little daily living things. Those add in some way to the quality of life that you're going to live. When one visits a place like Dadar Parsi colony, there is that instant sense of, oh wow, like, you know, where have I come? What I call fondly the Alice in Wonderland effect. We're lucky to be able to have the various different styles of architecture that one would see in our heritage buildings if you walked around. We're also the only locality within Mumbai that has got 2 schools, a daycare center, we have auditoriums, we have a madrasa, we have a fire temple. If you go to see, Bombay is an island where we're located geographically. We're not too far from the sea on both waterfronts. In the last 2 years, we have sort of lived and breathed environmental change that we keep talking about generically at a more personal level. We do live in a forest, it's a fact. We have over 100 plus trees that exist over here which were planted because you were going to build a residential community. So it was necessary to be able to have a certain sort of urban planning in the flora and fauna as well. Post a pandemic, there is realization how the need for well-planned urban spaces is ultimately going to in some way affect the longevity and the well-being of the people that actually live in it.
पहले के मटेरियल में अच्छी क्वालिटी थी पर अभी के मटेरियल में ज़्यादा क्वालिटी नहीं है। हाँ, ये तो सही बात बोल रहे हो आप। मगर ना यहाँ के मटेरियल ज़्यादा अच्छे यूज़ भी नहीं करते, उसके वजह से अभी के ये सब अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे। Hi, I'm Faridun Bhujwala, also known as Dodo. I've been living in this precinct, this heritage precinct of the Art Deco face-off with the Gothic of the High Court and the university since 1969. What's lovely about it is the sense of abstract art and the straight lines and the geometry. The trimmings on the verandas and our windows, they had typical Art Deco lines, which are very clever because they also cut the glare. When you shut the windows, because normally you have the window and you just have the glare coming in, but because of these wooden lines on it, the glare would get cut. Also, these buildings are very cleverly stacked. They're alternative. So we get a cross wind from Marine Drive through to probably Colaba because the buildings are staggered. And any given day, if you're sitting in my dining room or even my corridor, there's always a pleasant breeze. And it's on a hot May day, even during the pandemic, there were days when I'd lie in the center and do my yoga without a fan because you didn't need a fan because there was always air flowing in. So another thing is our windows are also so well, like the corner windows, you have a lovely view of either the park and the length of the road. So everything is very design sense. So the building was built between 36 and 39. This whole line from the Eros down to Mantralaya were the first Art Deco sort of apartments built between 36 and 39. And then came the line behind and then the Mantralaya and this rest of it. We came in here in 1969. So we earlier lived down the road at New Marine Lines. क्या बोलूं? तुझी झलक वे गली श्रीवल्ली। अरे आज हम खेलने वाले हैं गेम। क्या बोलूं? तुझी झलक वे गली श्रीवल्ली। अरे आज हम खेलने वाले हैं गेम। There's enough air for you to breathe, there's enough of light for you to read and live with. These buildings have enough space for your water consumption. Ideally, we could also do our own rainwater harvesting. Unfortunately, not enough people are ready to do it. We should be doing it in this day and age. So I'm not sure about where this came from, but it seems like they're designed with a sense for living and not cramping you into a small space. So during the lockdown and the pandemic, having the space and the light and the air was a big relief because I know a lot of friends who live in really small houses, and I mean, for them not to be able to go out for a walk or a run probably spoiled their health. I mean, these places are built with so much cross ventilation and light and air that I can sun myself lying in bed on the veranda. So since there is this global warming and there's a fear of South Bombay being drowned by 2050, there's a likelihood because this is all reclaimed land, and Bombay being originally 7 islands, we've pushed the ocean out, and with the water levels rising, with the ice caps melting, it's a likelihood. Maybe these things can change, maybe things can come in hand, but yeah, I think we have a chance to survive. So I think what kids, probably schooling kids now need to realize, there is a need for aesthetics, and there's a need for line, there's a need for design. Everything is not just convenience. You know, everything is not just like order in and sit with a piece of plastic. The buildings look like plastic. You have this plastic blue glass and chrome buildings. Those are not made for our country. They heat up. So that means you need more AC. That means you consume more electricity. That means your carbon imprint is going higher. Whereas these buildings, you can literally, we're sitting here without a fan and it's fine. Okay, it's cooler weather, but we can sit here with a fan on May if you open the doors and windows, you know.
So people need to realize that they don't need to constantly live a life that they're seeing on television. They hardly even open doors and windows, I mean, they're breathing constant recycled air conditioning. And that's going to destroy their immunity. Kids should learn to communicate clearly, communicate from their own mindset and not repeat what they think people want to hear. So I think, yeah, be original. Look for your own thought, look for your own groove. और मैंने आर्ट डेको में सीखा पुराने ज़माने की बिल्डिंग अच्छे भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। तो मैंने सीखा कि अगर हम और पेड़ पौधे उगाएंगे तो और हरा भरा हो जाएगा, तो हमें हरे भरी जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। चलो चलते हैं गेम खेलने। स्वागत है आपका स्क्रैपी न्यूज़ में। मैं हूँ आपका स्क्रैपी न्यूज़ रिपोर्टर सिद्धांत और आज हम बात करने वाले आर्ट डेको गेम के बारे में, जो कि यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। इन दोनों टीम का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। तो इन दोनों टीम को मिले 30 मिनट। जिस टीम के 30 मिनट्स में क्रिएटिव ड्राइंग्स होंगे वो टीम होगी विनर। तो चलिए इनके पास चलते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? धुआं बना रहे हो। अरे अभी धुआं बना रहे। अरे अच्छे से मिक्स कर। तो चलिए दूसरी टीम के पास। अभी आपने कितना ड्राइंग बनाया है? अभी हमारा बहुत सारा बन गया। अभी हमारे थोड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी वो टीम दोनों ग्लोबल वार्मिंग दिखा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 4 मिनट बचे हुए। तो अभी चलते हैं दोनों टीमों के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका ड्राइंग कितना कंप्लीट हुआ है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए अब तक इस टीम ने इतना कुछ ड्राइंग बनाया है। तो अभी आपकी टीम ने कितना ड्राइंग कंप्लीट? जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है इस वक्त। दोनों टीमों में से इस टीम ने अपनी ड्राइंग आधे घंटे के अंदर पूरी कंप्लीट कर चुकी है। क्या आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है? नहीं। तो चलिए चलते हैं दोनों टीम के पास और उनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसा ड्राइंग बनाया और उसका मीनिंग पूछते हैं। हमने एक साइड ऐसा दिखाया कि जो हमारी पहले धरती थी ना, वो बहुत अच्छी और हरी भरी हुआ करती थी, और जो अब हमारी धरती वो ऐसी हो गई है। तो ये किस वजह से हुआ है, आप बताएंगे? ये इस वजह से हुआ है कि हम लोग ही कचरा फेंकते, पोल्यूशन करते। पोल्यूशन की वजह से ऐसा हाल है। अगर हम पोल्यूशन नहीं करते तो ऐसा हाल होता। अभी आपने कितना बना चुके हो ड्राइंग? क्लाउड्स, अर्थ, वो बिल्डिंग है, उसके ऊपर से पोल्यूशन हो रहा है, वो ट्रीज है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों टीम्स ने काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ ये वॉल पेंटिंग्स बनाई हैं। और इस बार टीम A जीत गई है। तो देखा आपने, दो टीम्स ने कितनी सुंदर तरीके से अपना वॉल आर्ट क्रिएट किया है। आर्टिस्ट सब बच्चों के अंदर होता है। इस गेम में बच्चों ने आर्ट डेको के बारे में सीखा है और अपने अंदर के आर्टिस्ट को खोजा है। मिलते हैं अगली बार। बी स्क्रैपी, बाय बाय।